shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion tint, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou post, nor shall death break thou bond rest initiate, when in eternal lines to time thou growest. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Dear students, this is a sonnet composed by William Shakespeare. William Shakespeare, a great poet, a well-known dramatist and an actor too, belongs to the Elizabethan age that covers 1558 to 1603 years. He wrote 37 dramas as comedy, tragedy, historical plays, Roman plays and romances. Apart from these dramas, he wrote 154 sonnets. A sonnet is a 14 lines poem written in iambic pentameter. His 1 to 126 sonnets were addressed to an untimely died friend, W.H. The remaining 127 to 152 sonnets were addressed to some dark lady whose identity is still unknown. The rhyme scheme of Shakespearean sonnet is A B A B, C D C D, E F E F, G G. Now the poem Shall I Compare Thee? This poem has no a distinguished title because its first line is very famous, so it has been given the title by its first line. Now the poem Shall I Compare Thee? Shall I compare thee to a summer's day? The poet is asking his friend whether he should compare his beauty to a summer's day. Summer's day is regarded as very beautiful in England because their winter season is very chilly, very cold, and so summer season is very relaxing. And that's why the poet compares his friend's beauty to the beauty of the summer's day. He asks his friend whether he should compare him to a summer's day in the very first line. And next he finds what? He says, thou art more lovely and more temperate. You are more lovely, you are more beautiful and more temperate. Temperate, balanced, tempered, संयमी. तुम ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा संयमी, शांत हो. Rough winds do shake the darling birds of May. He explains it further that in summer season what happens? Why summer season is not so beautiful? He says, rough winds, आंधियाँ, do shake the darling, the lovely, beautiful birds of May. In the month of May, मई के महीने में जो सुंदर कलियां होती है फूलों की,
उनको भी आंधियां हिला देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। जो बर्ड्स इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं, उनकी ब्यूटी भी डिस्टर्ब हो जाती है बाय रफ विंड्स। एंड समर्स लीज, समर्स ड्यूरेशन hath all too short a it. It is very short lived. That is, the period of summer season is short lived, while his friend is more beautiful and long lasting. In this way, in this first stanza, he introduces his theme and develops it. Next, in the second, what does he say? Sometime too hot the eye of heaven shines. कभी कभी too hot, extremely hot, the eye of heaven. It is metaphorical language for the sun. The eye of heaven here for the sun shines extremely bright in summer season. That becomes embarrassing to the people. And thus the beauty of summer season is destroyed, impaired by it. And often is this gold complex sentiment. And often, sometimes, generally, gold complexion of the sun, the gold appearance, the gold face of the sun becomes dim in summer season too, and this becomes dim by the clouds, and every fair from fair sometime declines, and it is a general statement that every beautiful thing by the course of time declines. Its beauty perishes by the course of time, and so summer season's beauty will be perished in the course of time too. But the beauty of his friend will never be perished. Why? Because this poem has made him eternal, permanent. Because this poem is permanent, and that's why his friend will be so. So he says, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. बाई चांस, संयोग के द्वारा या प्रकृति के बदलाव के नियम के द्वारा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. इट इज अ रूल ऑफ नेचर. एवरीथिंग पेरिसेज इन द कोर्स ऑफ टाइम, but thy eternal summer shall not fade. Now he comes to his friend, that your eternal summer, your eternal youth, summer youth shall not fade. ये कभी फेड नहीं होगी, कभी डिम नहीं पड़ेगी. Nor lose possession of that fair thou owest. और जो ब्यूटी तुम्हारे पास है उसका तुम पोजेशन कभी नहीं खोओगी, हमेशा तुम्हारे पास रहेगी. क्यों? क्योंकि तुम इस पोएम की लाइंस में हो. तुम्हारे बारे में लिखा गया है कि यू आर ब्यूटिफुल एंड यंग, योर इटर्नल समर इज हियर, एंड सो यू विल नॉट बी old or will get death again. He said, nor shall death break the bone rest in his shit. Death shall not break thou, shall not break, draw you, bone rest in his shit, in his shit. तुम्हें अपनी शेड में कभी भी नहीं ले पाएगी. अर्थात मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी. एक बार जो डेड हो चुका है उसका दोबारा डेथ क्या करेगी. सो डेथ हैज नो पावर ऑन यू. when in eternal lines to time thou goest, when in eternal lines to time thou growest. जब टाइम के प्रति ये इटर्नल लाइन्स हैं, इनमें जब तुम रहोगे तो मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी. So he concludes this sonnet in this couplet.
so long as man can breathe or eyes can see, जब तक मानव सांस लेगा या आंखें देख पाएंगी, अर्थात जब तक यह दुनिया रहेगी, so long lives this, तब तक यह पोएम रहेगी, and this gives life to thee, और तुम्हें जीवन प्रदान करती रहेगी. Such as beautiful sonnet is shall I compare thee. Now come on to its critical appreciation. In exams you get such as a question, write a critical appreciation of the poem Shall I Compare Thee. So you should write in this way. First of all, write introduction to the poet. As William Shakespeare is one of the greatest poets and playwrights of the Elizabethan age. विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के महानतम कवियों और नाटककारों में से एक है. He wrote 37 dramas, 154 sonnets and great poems. उसने 37 ड्रामा लिखे, 154 sonnets और भी ग्रेट पोएम्स भी लिखी थी. 2. He was called the Bard of Avon. उसे एबोन का बार्ड या सेंट पोइट कहा जाता है. He was an actor too, और एक्टिंग भी उसने की थी. His works are unique and popular in the world. और शेक्सपियर के वर्क्स यूनिक हैं, अद्वितीय हैं और संसार में लोकप्रिय हैं. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू द पोएम. द पोएम entitled Shall I Compare Thee is a sonnet. यह सोनेट है. इट इज एड्रेस टू हिज फ्रेंड WH, और उसके फ्रेंड WH को संबोधित है. Who got premature death, जिसकी असमय ही मृत्यु हो गई थी. द पोएट हैज इमोर्टलाइज्ड हिज फ्रेंड. पोएट ने अपने फ्रेंड को इमोर्टलाइज किया है, अमर किया है इस पोएम में. He finds his friend more beautiful and calm than the summer's day. वे अपने फ्रेंड को ज्यादा सुंदर और शांत पाता है समर्स डे की बजाय. His friend's beauty is permanent. उसके फ्रेंड की ब्यूटी परमानेंट है, स्थायी है. Death and time has no effect on him. और डेथ और टाइम उसे प्रभावित नहीं कर सकते, इनका कोई प्रभाव नहीं है. The poet is much confident about the success and popularity of his poem. और पोइट अपनी इस पोएम की सक्सेस और पॉपुलैरिटी के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट था. डेवलपमेंट ऑफ थॉट. द पोइट कंपेयर्स हिज फ्रेंड्स ब्यूटी टू ए समर्स डे. पोइट अपने फ्रेंड की ब्यूटी की समर्स डे से तुलना करता है. एंड फाइंड्स दैट, और पाता है कि हिज फ्रेंड इज मोर ब्यूटीफुल एंड काम देन इट. उसका फ्रेंड ज्यादा सुंदर और शांत है इसकी बजाय. रव विंड्स डिस्ट्रॉय द ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ फ्लावर्स इन मे. आंधियां नष्ट कर देती हैं सुंदर कलियों को, फूलों को इन द मंथ ऑफ मे. द समर सीजन इज शॉर्ट लिव्ड टू. और गर्मी का जो सीजन है शॉर्ट लिव्ड भी होता है, कुछ ही महीनों का होता है. द पोइट राइट्स. आपको बीच बीच में ऐसे पोएम की लाइंस भी देते रहना चाहिए जो भी आप आंसर लिखते हैं उसमें, क्योंकि यही स्कोरिंग होता है. नेक्स्ट, द सन शाइन्स एक्सट्रीमली हॉट इन समर. सूर्य अत्यधिक रूप से चमकता है गर्मी में. एंड समटाइम्स इट्स गोल्डन कॉम्प्लेक्शन बिकम्स डिम्ड. और कभी कभी इसका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन भी डिप पड़ जाता है बादलों से. एवरी ब्यूटीफुल थिंग डिक्लाइन्स इन द कोर्स ऑफ टाइम. प्रत्येक सुंदर चीज बाय द कोर्स ऑफ टाइम, समय के द्वारा उसका पतन हो जाता है. सो द ब्यूटी ऑफ समर विल पेरिश आफ्टर ए शॉर्ट टाइम. इसलिए समर की ब्यूटी भी कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी. बट हिज फ्रेंड इज इमॉर्टल. लेकिन उसका फ्रेंड अमर है. हिज ब्यूटी विल नॉट पेरिश. उसकी सुंदरता नष्ट नहीं होगी. इवन डेथ विल हैव नो कंट्रोल ओवर हिम. मृत्यु का भी उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा. बिकॉज ही इज एग्जिस्टेड इन द लाइन्स ऑफ दिस पोएम. क्योंकि वह पोएम की लाइन्स में है. एंड दिस पोएम इज इमॉर्टल. और ये पोएम तो इमॉर्टल है, ऐसा उसे विश्वास है. ऑप्टिमिज्म, आशावादिता. द पोएट इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ हिज पोएम. यह पोएट बहुत ही आशावादी है अपनी पोएम की सफलता और लोकप्रियता के बारे में. ये आवश्यक रूप से सफल होगी. He says that his poem will exist till the existence of the world. उसकी पोएम विद्यमान रहेगी इस दुनिया में जब तक कि यह संसार रहेगा.
ही राइट्स, वो कहते हैं इन दिस वे। डिस्क्रिप्शन ऑफ समर सीजन, समर सीजन का इसमें डिस्क्रिप्शन है। समर सीजन इज वेरी ब्यूटीफुल इन यूरोप, यूरोप में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। दिस ग्रोज ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड ब्लूम्स फ्लावर्स बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटी, और इसमें फिर सुंदर सुंदर फूल आते हैं, कलियां खिलती हैं। ही कंपेयर्स हिज फ्रेंड्स ब्यूटी टू इट, और अपने फ्रेंड्स की ब्यूटी से कंपेयर करता है। बट समटाइम द सन शाइन्स एक्सट्रीमली हॉट, कभी कभी सूर्य बहुत तेज चमकता है, और इट बिकम्स डल बाय द क्लाउड्स, और क्लाउड्स के द्वारा डल भी हो जाता है। रफ विंड्स ऑल्सो डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ समर्स डे, आंधियां समर्स डे की ब्यूटी को बिगाड़ देती हैं। इट डिस्ट्रॉयज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर फूलों को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। द पीरियड ऑफ समर्स डे इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट, और समर्स डे का पीरियड शॉर्ट भी होता है, जबकि उसका फ्रेंड तो परमानेंट है। इट्स फॉर्म, द पोएम इज ए सोनेट, ये पोएम एक सोनेट है। अ सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम, सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं। इट इज एन इंग्लिश सोनेट, और ये इंग्लिश टाइप का सोनेट है, एक इटालियन होता है और ये इंग्लिश है। देयर आर 3 क्वार्टेंस, इसमें 3 क्वार्टेंस हैं, एंड 1 कंक्लूडिंग कपलेट, एक क्वार्टेंट में 4 लाइन्स होती हैं, तो इसमें 3 क्वार्टेंस है और 1 कंक्लूडिंग कपलेट है। इट्स मीटर इज iambic pentameter and its rhyme scheme is this. Conclusion, this poem is beautiful tribute to his dear friend W.H. उसके प्रिय मित्र W.H. के लिए बहुत ही सुंदर श्रद्धांजलि है। He has been immortalized in this poem. इस पोएम में उसे अमर किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह है आपकी पोएम है शैल आई कंपेयर दी, बहुत ही सुंदर पोएम है। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, इनमें यह फर्स्ट सोनेट था जो कि पॉपुलर हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह पोएम कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।